everyone, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अब्दुल रहमान and you know you're watching SAR Vlogs. Oh my god, मैं बात भी नहीं आ रहे. I'm a moto vlogger, traveler and also a YouTuber. Today we are going to explore Shivamogga and the other side of the Bangalore. As you have seen in my previous vlog, it was very challenging coming here. और बारिश की वजह से तो मैं आधा व्लॉग ही नहीं कर सका, बट हाउ मच एवर आई कैन व्लॉग आई हैव डन इट. मैं सुबह में भी कुछ जो भी मैं टिफ़िन जो करा आई थॉट आई विल व्लॉग इट ठीक है, लेकिन बारिश ऐसा होके रखी हुई थी और हम लोग को भी जल्दी निकलना था. वी डिडंट गेट अ टाइम. हाउएवर वी आर रनिंग लाइक 1 hour लेट. भयंकर बारिश. अरे मौत सुन का मौसम आया, तन मन मेरा मत जाया, अब तो हंस के कह दे गोरी तेरे लिए एक चीज़ लाया अब तो. अरे हनी सिंह के भी क्या दिन थे वो. हाँ, मेरे को मालूम है आप लोगों को आधे से ज़्यादा वीडियो दिख रहा ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ वो कैंप पे पूरा वाटर आ गया होगा, लेकिन अपन छोड़ने वाले नहीं है. अरे ठहरे बाबा, यहाँ पे छोटा सा लेक है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नो. यहाँ पे ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द रोड्स आर लाइक यू नो राइट साइड में पूरा जंगल, लेफ्ट साइड में वाटर, या लेफ्ट साइड में वाटर तो राइट साइड में पूरा जंगल. सो राइट नाउ I actually forgot to tell where we guys are going. So yeah, today we all are going to see lion and tiger safari, Shivamogga. According to Google it is closed. I don't know why. Tuesday के दिन close दिखा रहा. So first we have to go and have to see. It is 10 kilometers from here, from our place. So I think we have already covered 20 kilometers. 2 kilometers. So few more 8 kilometers and we'll reach the destination. Later on, then you'll come to know. However, so yeah. After this we have to go like maybe around 2 or 3 different places. After this you will be seeing this thing in different vlogs. I can't show you in a same vlog because you know obviously it's going to be very lengthy. That's why. ये ट्रैवल वीडियो है, टिकटॉक वीडियो नहीं है. 60 सेकेंड में आपको सब दिखाने के वास्ते, समझ रहे हो ना. मानसून में भी राइड करने का अलग मज़ा है. हालांकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, बट या यू आर नॉट गोइंग टू गेट सच ए ब्यूटी. ये ग्लव्स क्या हुआ नहीं मालूम, अगर पानी जाता ना इसमें एकदम टाइट हो जाते हैं ना. लेदर के प्योर लेदर है इसीलिए. और तो और ये लेदर ये ग्लव्स जो है अंदर से पूरा कलर छोड़ रहे हैं नॉट के, पूरा ब्लैक हो जा रहा हाथ अंदर से. वाओ यार, लश ग्रीनरी, लश. एक्चुअली जब ये रूट रात में भी आ रहे थे ना, so there were more cars than bikes. I think hardly we were 2 to 3 bikes. That's it. And रात में आना was like big challenge. मेरा NS 200 में हाई बीम नहीं काम कर रहा. I have no fucking idea why, but it's not working. बहुत slowly है. Like 4 hours journey we did in 7 hours. So then you can understand. A few moments later. क्या वो क्यों क्लोज है आज? आज क्लोज क्यों है? हॉलिडे मंगलवार. एवरी ट्यूसडे हॉलिडे. It seems every Tuesday it is closed. Every Tuesday it is like closed. So we got next spot which is going to be around 100 kilometers. As we have already covered 10 kilometers, so we have to travel more 100 kilometers and we will be reaching Jog water
waterfall. Yes, sir. We are going to Jog waterfall. I'm the only one in the YouTube who says like, oh my god, what a road. Oh, what a beautiful road. Oh, what a greenery. I hope I'm not. मानसून के मौसम में आने के फायदे यही है. Just see man, क्या दिख रहा रोड. फिर से बारिश स्टार्ट हो गई. एक बार साउंड अपने सराउंडिंग में बस साउंड सुनो आप. नेचर की साउंड सुनो बस. 10 सेकंड के वास्ते सुनो बस. बारिश तेज हो रही, बारिश तेज हो रही. निकलना है. विल सी यू ऑन द नेक्स्ट स्पॉट. A few moments later. फुल बारिश हो रही. ये देखो यहाँ पे सीन. माय गॉड, माय गुडनेस, बारिश में ये मज़े. वेलकम टू जोग फॉल्स. आई वेलकम यू वर्चुअली टू द जोग फॉल्स. A few inches later. तो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ जोग वाटरफॉल. और अपने दोनों भैया फ़ोटो शूट के से रेडी हो रहे हैं. तो अब यहाँ पे थंबनेल के वास्ते फ़ोटो ले रहा था यहाँ पे. तो दिस इज़ द एंट्री फीस क्या है मैं अंदर जाने के बाद बताता. लेकिन अभी फ़िलहाल जो है दोनों भाई के फ़ोटो लेंगे. राइट नाउ यू आर वॉचिंग वन ऑफ द ब्यूटिफुल waterfalls behind me, also known as Jog waterfalls. I will definitely show you the footages, but I'm telling you it, I already feel like I'm in heaven. और वहाँ पे ऊपर छोटा सा कॉटेज है एंड इट इज़ सो सेक्सी. इतनी मेहनत करके आने के बाद जो फल मिलता है ना, बहुत मज़ा आता है देखने में ऐसी चीज़ें. आई विल शो यू द फुटेजेस. जस्ट एन्जॉय इट मैन फुल्ली विदाउट स्किपिंग द वीडियो. जस्ट एन्जॉय. So this is the end of this vlog.
Even I am sad to tell this on the screen, on camera. By the way, I'm having my chicken roll. Only 15 rupees. Very tasty. So right now, as you can see, that beautiful waterfalls, man. Jog waterfalls. Really very beautiful. And it's like a heaven, man. Really, it's like a heaven. So, for showing this to you, for showing this beautiful nature to you virtually, please support me. Make sure you subscribe to my channel SAR Vlogs and follow me on Instagram to get the updates before the YouTube. And also please share with your friends and family members. And I hope you are excited for the next vlog, because we are going to another place which is going to be more like very beautiful place. So it's around maybe 120 kilometers from here, so we have to start now. It's 3 o'clock now. We'll be leaving this place very sadly, but yeah, we'll meet you in the next vlog. Have a nice day. Take care. Bye bye.